सॉलिड्स जो होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डेफिनाइट शेप एंड साइज. कोई भी सॉलिड यदि आप बोल रहे हैं तो दैट विल हैव द डेफिनाइट शेप एंड साइज. दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक. वन थिंग. सेकंड थिंग, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जो भी पार्टिकल्स है दैट आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. Constituent particles have stronger attractive forces among themselves. As a result, such materials have the definite shape and size. That is a characteristic of solid. Anything else about the solid? Okay. So the particles which constitutes the solid are called as a constituent particles, and such particles are atoms, ions, or molecules. Atoms, ions, or molecules. These are the constituent particles of any kind of solid. किसी भी टाइप का सॉलिड बोलेंगे आप तो उसके अंदर एक तो आइटम्स रहेगा या फिर आयंस रहेगा या फिर मॉलिक्यूल्स रहेगा. And they remain together by strong attractive forces. Strong attractive forces which may be covalent bonds. That is one type of attractive force. Ionic bonds or hydrogen bonding may be there. So these are attractive forces that are responsible for holding these particles together inside the nucleus. Due to strong attractive forces, solids have compact arrangement of particles will be there. So these particles are quite closer to each other. That is called as a compact arrangement. So due to strong attractive forces, solids have the compact arrangement of particles which give rise to what? Definite shape and size. So attractive forces है compact arrangement and that will give rise to definite shape and size of the solid. Rather they are characterized by their melting point. थोड़ा सा हीट लग गया और मेल्ट हो गया, ऐसे नहीं होता. आयरन, gold, aluminium, steel, all these are the materials which are solid and they melts at higher temperature. On the other hand, हमारे पास ice है, that is also a solid. Ice is also solid, but it melts at room temperature. वो एक exception हो सकता हमारे लिए. Solids have the higher melting point. So what are the constituent particles? Atoms, ions, or the molecules. How they remain together? By strong attractive forces like covalent bonds may be there, ionic bond may be there, or some hydrogen bonding may be there. So due to strong attractive forces, solids have the compact arrangement of particles which give rise to the definite shape and size. Solids have
हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू किसी लिक्विड या गैस की बात करते हैं तो उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, सॉलिड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड दैट इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू एनी अदर सब्सटेंस. Okay, look out, all these things, these are studied previously. Okay, is that, are you taking this one or not? Broadly, the solids are classified into two types. ये जो solids होते हैं mostly they are broad classification देखते हैं तो solids are of two types. एक होता है हमारा crystalline solid, और दूसरा amorphous solid टाइप से. वो बाद में, पहले ये दोनों को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड. देखिए चक्की का आटा जो होता है, फ्लोर, व्हीट, दैट इज आल्सो सॉलिड. यू नो सोडियम क्लोराइड इन पाउडर्ड फॉर्म होता है हमारे घर में, दैट इज आल्सो सॉलिड. ग्लास, वो भी सॉलिड है हमारे पास में. गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ऑल दीज आर आल्सो सॉलिड्स. बट व्हाट इज द डिफरेंस? एक तरफ ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, दूसरे तरफ ये मटेरियल्स मैंने बताया आपको, सोडियम क्लोराइड है आपके पास में, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम फ्लोराइड है, ऑल दीज आर आल्सो सॉलिड्स. ठीक है. ऑन द अदर हैंड दूसरे सॉलिड्स मैंने बताया, रबर, प्लास्टिक, वुड, क्ले, these are also solids. But what is the difference between these types of solids? So जो crystalline solids होते हैं इसके अंदर constituent particles बताने का हमारा एक स्टाइल होगा like this. These are the particles of solid which may be atoms, ions or molecules. And now these are the particles with definite repetitive arrangement. One cation, one anion, one cation, one anion. Now this will be ionic solid जिसमें constituent particles are the ions. यहाँ पे आयन है, किसी Fe का करते हैं, आयरन का करते हैं तो only atoms will be there. Now this is again negative ion, negative, positive. So anions and cation इतने ज्यादा नहीं निकालेंगे, हम शॉर्ट में करेंगे इसको. So this is what a well ordered, एक cation, एक anion, each of the cation and anion are surrounded by the two ions. So this is what a repetitive type of arrangement. Repetition हो रहा है यहाँ पे, along this line जा रहे हैं तो that is along x axis, ऐसे चल रहा है तो that will be along y axis. तो टू डायमेंशनल तो आपके सामने आ गया है, टू डायमेंशनल. अब सेम स्ट्रक्चर इसके ऊपर निकाल देते हैं ऐसे ही, इसके ऊपर में एक ऐसे रख दिया, उसके पीछे से एक रख दिया. नाउ दैट विल बी थ्री डायमेंशनल. नाउ हियर द वेल ऑर्डर्ड रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल. सीक्वेंस जो है वो सेम है बिल्कुल, एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, इसके ऊपर में भी रख दिया. नाउ इसके बीच में भी हम कुछ रख सकते हैं. ये जो खाली जगह दिख रही है, these are called as empty spaces that are also occupied. इतना empty space नहीं होता सॉलिड में. they have the compact arrangement. एक दूसरे को लग के होते हैं ये पार्टिकल्स, ऐसे दूर दूर नहीं होते. Now this will be called as a compact arrangement. This is what well ordered and repetitive arrangement. Well ordered and repetitive arrangement in three dimension. Three dimensionally भी आप इसको सोचेंगे तो that will have the repetitive arrangement of the particles. Regularly all these particles are placed. Now these are the compact arrangements of the particles. So अब इसके ऊपर में रख देंगे आप ऐसे स्ट्रक्चर, इसके ऊपर और इसके ऊपर एक ऐसा, तो इतना बड़ा बॉक्स बन जाएगा आपका. Now such type of arrangement is what three dimensional है.
रेगुलर है, कोई ऐसा इरेगुलरिटी नहीं दिख रहा है, रेगुलर है. नेक्स्ट इज repetitive, or you can say periodic. You can say the periodic arrangement or repetitive arrangement of the particles in 3 dimension. Such a substances or the solids in which particles have the well ordered repetitive arrangement of particles in 3 dimension, and in that case they will be called as crystalline solids. Crystalline solids क्या है? तो the arrangement of particles, एक यहाँ निकाल देता हूं मैं, एक यहाँ निकाल देते हैं और एक आधा इधर में रख देते हैं. आपको 3 डायमेंशनली भी दिख जाएगा उसके अंदर, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता जितने इफेक्टिव इमेजेस आपकी टेक्स्ट बुक में वगैरह दिखती है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जहां तक बात है, दे हैव द वेल ऑर्डर्ड रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ particles in 3 dimension. Such solids in which constituent particles have well ordered regular repetitive arrangement in 3 dimension are called as a crystalline solid. Example की तौर पे देखते हैं तो you can have that NaCl, you can have that MgO, you can have that Na2CO3, you can have that NaNO3. All these are the crystalline solids. You can have that carbon in the form of diamond, or you can have that graphite, diamond, graphite, और एक allotropic form इसका है, आपको मालूम है, which is that? Yes? Fullerene. Fullerene. यहाँ पे एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, these are the atoms. These are the atoms. यहाँ पे जो लिखे हैं मैंने सॉलिड, खास तौर से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आयन रहेंगे. You know that solid CO2. This is your molecular solid. You know that phosphorus is a molecular solid in which constituent particles are the molecules. यहाँ पे ions है, यहाँ पे atoms है, यहाँ पे molecules है. Sulfur, ice. These are what type? Molecular solids, whereas these are ionic solids, whereas these are covalent solids in which constituent particles are the atoms. इसके अंदर atoms are the constituent particles, but all they have the regular repetitive 3 dimensional arrangement of the particles, and in that case they will be called as a crystalline solid. So what is meant by crystalline solid? The type of solid in which constituent particles have regular repetitive arrangement of particles in 3 dimension. Having 3 dimensional repetitive, regular and repetitive arrangement of the constituent particles, and in that case that will be called as a crystalline solid. So सबसे पहले आएगा आपका crystalline solid. Crystalline solid में क्या होता है? The solids in which atoms, ions or molecules. इसकी जगह आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, उतनी जगह लगेगी, उतनी ही इंक लगेगी, स्पेस लगेगी. सो इन विच हैव three-dimensional regular and repetitive arrangement. 3 dimensional regular and repetitive arrangement are called as crystalline solids. All these are ionic one. These are ionic, these are molecular.
और एक लिखते हैं आप डायमंड है आपके पास में, ग्राफाइट है, then a fluorine is there, and you know that silicon. So ये एक टाइप के है, ये दूसरे टाइप के सॉलिड है, ये तीसरे टाइप के सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और तीन टाइप आपके सामने आ रहे हैं कि जिसमें आयंस आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देन दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनिक सॉलिड, whereas जहां पे एटम्स आर constituent particles are the atoms with regular and repetitive arrangement in three dimension. In that case, that will be called as a covalent solids. They are held together by the strong covalent bonds. इनके बीच में जो attractive force है उसको हमने नाम दे दिया covalent bond. And in that case, such solids are called as a covalent solids. Whereas these are the molecular solids in which attractive forces among the molecules are there, like hydrogen bonding will be there. या फिर dipole-dipole interactions are there. In that case, these are the molecular solids. These are molecular solids, these are covalent solids या फिर network solids, and these are ionic solids. तो इसमें constituent particle के हिसाब से ionic, molecular या फिर covalently bonded solids, इस तरह से हम उसको classify करते हैं। और एक टाइप होता है metallic solids, वो अभी नहीं करेंगे हम, just example देने थे, दे दिए। Now these are the crystalline solids जिसमें constituent particles have regular or repetitive arrangement of particles in three dimension. On the other hand, इसकी बात करते हैं amorphous solids की, तो इसके अंदर जो particles है, they do not have any regular or repetitive arrangement of the particles. Only they have the particles and there are some attractive forces, but their arrangement is a random arrangement. Random arrangement of particles that will be giving rise to the amorphous solid. So are you taking this? Okay, take down this one. Now crystalline solids जो है, they have a well defined melting point in pure form. यदि वो pure है तो that has a characteristic sharp melting point, that is a characteristic of pure crystalline material, well ordered, 100% well ordered arrangement will be there. Entropy जो है इसका zero होगा crystalline solid का at absolute zero temperature. That is your third law of thermodynamics. They do not have well ordered repetitive arrangement, जिसमें पार्टिकल अरेंजमेंट काफी रैंडम होगा. दे आर कॉल्ड एज amorphous solid. All these are amorphous solids. They do not have well-ordered repetitive arrangement of the constituent particles. So in that case, they will be called as an amorphous solids.
Anisotropy is a property of crystalline solid. This is what property of क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब हमको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया मैंने. These are the constituent particles. खास तौर से ये well ordered repetitive arrangement of cations and anions is shown. These are the constituent particles. And now you are measuring the electrical conductivity or refractive index or electric field intensity measure करना चाहते हैं आप in this direction. So if this electric intensity is measured in this direction, then that will have the value of E1. If you measure along this direction, then that will have some other value E2. Whereas if you measure in this direction, then that will have the value of E3. Now the same physical property is measured for this solid. वही physical property, electrical conductivity लेंगे आप या फिर electric intensity ले लेंगे आप. तो यहाँ पे when it is measured in one direction, then it has one value. When it is measured in another direction, that has a second value or third value or fourth value. Means when such properties are measured in different directions, then they have the different values. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते इस टाइप के सॉलिड का इन दिस डायरेक्शन, देन उसका एक वैल्यू आएगा 2.3 सपोज. देन इन दिस डायरेक्शन मेजर करेंगे दैट में भी 2.1. इन दिस डायरेक्शन मेजर करेंगे दैट में भी 1.5. सो दैट प्रॉपर्टीज हैव द डिफरेंट वैल्यूज व्हेन दे आर मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉपर्टीज में, दैट इज ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलोंग दिस डायरेक्शन. Along this line, how many cations and anions are there, and in that case the properties will have the different values. So that is called as anisotropy. The property of crystalline solid by which physical properties have different values. Physical properties का वैल्यू अलग अलग आएगा when measured in different direction. Physical properties have different values when measured in different directions. And the solids are called as Anisotropic solids. Refractive index measure करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो that will have the different value for such solids, and in that case that is anisotropic solid. Electrical conductivity measure करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो उसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो crystalline solid ही होगा. Means crystalline solids are anisotropic. Different physical properties, the physical properties have the different values when measured in different directions. So that is anisotropic. Crystalline solids are anisotropic. Now such physical properties in case of amorphous solids, all such physical properties when measured in any direction have the same value.
ये किसका है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी। ये किसका है? एमॉर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टी होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड बाय विच यहाँ डिफरेंट वैल्यूज लिखा था आपने व्हेन दे आर मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सेम वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलग अलग डायरेक्शन से भी मेजर करते तो दैट विल हैव द सेम वैल्यू। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते अब, ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे उल्टा सीधा सीधा उल्टा प्रिज्म कैसा भी रखो, दैट विल हैव द फिक्स वैल्यू व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। That is called as anisotropy. And solids are called as isotropic solids. Example, glass is isotropic. Isomorphism means different substances are there and they have the same crystal structure. जो geometrical arrangement आप study कर रहे हैं particles का, that is the same in case of both the materials. Two different materials are there and they have the same structural arrangement, and in that case they are called as isomorphs of each other, and property is called as isomorphism. Two different solids having same crystalline structure are called as isomorph. They are called as isomorphs. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास they have the same structures. सोडियम फ्लोराइड ले लो चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, that will have the same structure. दूसरा पेयर है, these are CaCO3 and
NaNO3। रेशो जो है वो 1:1:3, यहाँ पर भी 1:1:3। रेशो ऑफ कंबाइनिंग नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 1:1:3, वहां पर भी NaNO3 में भी सेम आएगा। चलो भाई, आइसोट्रोपी। सेम सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। जैसा कि कार्बन लिया आपने तो उसका डायमंड भी हो सकता है, ग्राफाइट भी हो सकता है, फुलेरिन भी हो सकता है। दैट इज एलोट्रोपी, दैट इज एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म। Existence of same solid in different crystalline forms. The existence of same solid in different crystalline form is called as polymorphism. Or you can say allotropy. एलोट्रोपी जो वर्ड है वो एलिमेंट के लिए होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके अलग अलग फॉर्म्स है हमारे पास में, दैट इज अ कैल्साइट एंड एर्गोनाइट। आप जिसको मार्बल बोलते हैं, कैल्साइट का क्रिस्टल होता है, एर्गोनाइट जो है आप पत्थर के नाम पे उसको पहचान सकते हैं किचन्स में, या फिर मार्बल का जो भी वर्क है दैट इज योर एर्गोनाइट। वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, दैट इज कॉर्ड्स जो है QUARTZ, कॉर्ड्स that exist in several allotropic forms, sorry polymorphic forms। एलिमेंट नहीं है कौन, सिलिका है। अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिक हो गया। अभी कार्बन, ये तो हमारा एलिमेंट है। इन 3 allotropic forms, ग्राफाइट हो सकता, डायमंड हो सकता, all these are the elemental forms, so these are called as allotropes। फुलेरिन भी हो सकता। सो एलिमेंट के लिए आप उसको एलोट्रॉप बोल सकते। कंपाउंड के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो यू कैन से द पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स।
shall I wipe this one? Yes, मिटाना है तेजस. क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला टाइप लिखने जा रहे हैं हम, आयोनिक सॉलिड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर दी कैटायंस एंड अनायंस. Crystalline solids in which cations and anions have regular and repetitive arrangement. कौन है इसके अंदर? cations and anions. These are the constituent particles of these are the ionic solids, or you can say the electrovalent solids also. Electrovalent solids. इनके बीच में strong attractive electrostatic forces of attraction will be there. They are held together by strong electrostatic forces of attraction. They are hard, they are brittle, and they have the high melting point. They do not conduct electricity in solid state. In molten form or in aqueous solution, they becomes a conductor of electricity. A well-known NaCl, KCl, these are the ionic solids. CaF2, cryolite. All these are the ionic solids which are hard, brittle, possesses high melting point,
They are bad conductors of electricity, but in dissolved state or in molten state, they becomes a conductor. So this is all about the ionic solids, जिसमें constituent particles are the ions. इसका जो constituent particle है वो हमारे लिए कौन होगा? Ions will be there. लावण्य इज फरार. इस्लामाबाद वाले, कराची वाले निकल गए. ठीक है. So is it over? Shall I wipe the ionic solids? Next is your covalent solids, or you can say the covalent solids or the network solids or the giant solids. Constituent particles are the atoms. Which are held together by strong covalent bonds are there. These are the attractive forces. Strong covalent bond. वेब ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जाला बन जाएगा. ऐसे बहुत सारा एक्सटेंसिव वेब, पूरा ऐसे जिधर देखो उधर कोवैलेंट बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स दिखेंगे और बीच बीच में एटम्स दिखेंगे लाइक अ सिलिकॉन. इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड. They are very hard and incompressible. आयरन ले लेंगे आप, इसमें तो चलेगा आपको. Incompressible.
high melting point will be there. कार्बोरेंडम हार्डेस्ट मटेरियल आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है. बोरॉन नाइट्राइड NiTride